Hare Krishna, good morning and welcome all of you all for our Sunday morning Bhagavad Gita class. So welcome all of you all. So we are in the midst of the 7th chapter of the Bhagavad Gita. We have completed 7.22 to 3 we completed last week. So we'll have a fast recap of what we did. So Lord is already saying that demigod worship अगर कोई कर रहा है, देवी देवता का worship कर रहा है, तो वो actually मैं ही उसको वो भक्ति दे रहा हूँ. आई एम गिविंग हिम दैट भक्ति इन हिज हार्ट, ताकि वो उस देवी देवता का पूजा कर सके. मोर व्हाट इज लॉर्ड सेइंग दैट ऑल द फ्रूट्स व्हिच यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम देम इज टेम्पररी. आज है, कल है, नहीं है, पता नहीं है. सो व्हाट आर वी एंजॉयिंग? टेम्पररी थिंग्स थ्रू देवी देवता. तो वन में से यस, टेम्पररी थिंग्स आर आल्सो रिक्वायर्ड लाइक मनी. दो इट्स टेम्पररी रिक्वायर्ड नो, में आने के लिए भी पैसे लगते हैं. हाँ, लैपटॉप या मोबाइल से देखने के लिए भी पैसे लगते हैं. सो क्या वो मांगना गलत है? ये सुरेश ब्रो, व्हाट डू यू थिंक? ये मेरा लॉजिक, क्वेश्चन लॉजिक है, सही है कि नहीं? भाई आप बोलते हो प्रभु भगवान के पास मोक्ष मांगो, पहले जीना तो पड़ेगा ना. और जीने के लिए बेटा मैंने जिसके लिए आप भी बोलेंगे यात्रा जाना है तो पैसा लगेगा. तो where will that money come? So engage myself in asking for money. If yes, justify. If no, yes. Open question. Let's ask senior. बोलो. If they are using the mobile phone for reading or for listening to the katha, then it is engaging the same thing into gossip or something like that. Very good. Something more someone would like to add? Damini Mataji would like to add something. Deepali is already having something in her thought. She can add. Okay, so basically applying it for service. So using all the luxury for betterment of yourself for doing the seva of Bhagwan. Someone from the some divine personalities from behind. Please understand one thing. Material previous karmas, they do not come by asking. There are so many atheists in this world who are filthy rich. Am I right or wrong, Pravin? So they did not ask. They don't believe also in God. Forget about asking. They don't believe in God also, but they are filthy rich. They have got many children. Whereas a devotee who is a very, staunch devotee of any Devi, Devata, Bhagwan, God, anyone, he doesn't have a child. What does this mean? भगवान का पूजा कर रहा हूं, मुझे बच्चा नहीं है, क्या बच्चों का? All these material things basically are from your prarabdha. If your prarabdha is having, if your destiny is having, if your karma is having, then only you can enjoy. Going to any Devi Devata, going is good, will keep you inclined in a spiritual platform, but it does not come. One may do in some certain business. Okay, let's say I am in some chemical business. There are people better off than me. There are people doing bad than me. What would you say? वो लोग जो ज्यादा कमा रहे हैं, he is doing lot of efforts. ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है वो. नहीं, मेरे से कम मेहनत कर रहा हूं, मैं उल्टे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, टूर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मीटिंग क्लाइंट्स, दिस एंड दैट, फिर भी मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है. और वो आदमी आराम से बैठा है और उसका बिजनेस अपने आप उसको ऑर्डर बह रहा है. कर्मास, पास्ट कर्मास. सो यू कैन नॉट change your karmas or your destiny, worship of Devi Devatas or even of God. अभी आपको लेट्स बहुत दुख में हो, के सामने प्रकट भी हो गए सर. भगवान ने बोला बोल दीदी क्या चाहिए.
I want freedom from all my problems. मेरे पूरे जो बुरे कर्म है जिसकी वजह से मैं सफर कर रहा हूं वो जीरो कर दो. भगवान से तथास्तु. ठप. You have to fall down dead. Because the minute your karmas become zero, you die. What is the meaning of the कर्म? जब तक भोगना है तब तक आपको जिंदा रहना पड़ेगा. एंड आजकल का न्यू ट्रेंड जो है आजकल, माय गॉड, आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ ओपनिंग न्यूज़पेपर. चिल्ड्रन आर कमिटिंग सुसाइड फॉर नथिंग. One teacher told to study, one mother said don't look at mobile. What is this nonsense happening? Literal nonsense. Without any calculation, any brains. I don't know why are they up to that. They have never understood the focus of life. Right? Focus of life is not certain things. Even it may be some love crush or something, that is not the focus of your life. But if you are focused on that, you are heading for a disaster. With human birth, by which you can achieve God, by which you can do something good. Even if you are not going to the platform of achieving God, at least you can do something good, some social welfare, some good to the people. You are not able to do anything and you are committing yourself thinking that this will end my problem. This will not going to end your problem. That means what? We are all in a position of not realizing what is good for ourselves and what is not required for us. अगर माँ बाप ने बोल दिया, parents say, no, you don't require this. Suicide. उस हिसाब से हम लोग hundreds of times we should have committed suicide. In our childhood, we never got things we asked for. It used to be a very nice circle, it was a system. We first used to put our petition towards mother. It's a petition. क्या छोटा सा कुछ चीज है. Compass box. अभी iPhone compass box. Highest used to be cycle. Highest petition used to be of cycle. तो मम्मी को बोल दिया. Then from lower court it will go to higher court. And वो भी कब बोलेगी? When father will be in a good mood. That time mother will recommend that to the father. And immediately it will never be passed. It will be postponed to the nearest favorable date. For him, not for me. It is to go, okay, let's see, अब एग्जाम्स में क्या रिजल्ट लेके आता है उस पर तय होगा. परफॉर्मेंस रिलेटेड हो गया. ठीक है. देन फिर बहुत रोया धोया तो 2 और झापड़ मिलेगा. So where is the question of thinking that it is you? We used to try. We used to be like King Solomon. Try and try till you succeed. We have all studied the King Solomon story. So we used to always try. But nowadays, now or never. Ab ya kabhi nahi. This is disastrous. And why and how this is happening? Because people have forgotten that is some superpower who is going to give you, and that is God. And before God, there is something called destiny also. When Ramchandra ji was asked by Lakshmana, Lakshmana says, भैया आप चिंता मत करो, अब भी खत्म करता हूं सब, पिताजी को भी बंदी बना देता हूं, जो भी रास्ते में आएगा उसको मैं उड़ा दूंगा. You become the king. Let me see who stops you. Rama calls Lakshmana and says, Lakshmana, I am very happy, but please understand, there is something called destiny. You can't fight destiny. Destiny is always overruling us. हमेशा हम पर हावी है. हमारा प्रारब्ध, हमारा डेस्टिनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग्य. भाग्य, नसीब, भाग्य, जो भी है. No, that is always controlling us. And we are under the hands of clutches of the destiny. Destiny is never in our clutches. And we call ourselves, I am independent. I can make my own self. I am in control of. You are in control of yourself. You are not in control of your. Not in control of your toilet also. What you are in control of your own self. Everything is controlled by someone else.
So basically, what is Lord saying is antavantat phalam tesam tad bhavet अल्पमेधसा. अल्पमेधसा मतलब कम अक्कल वाले लोग हैं जो सोच रहे हैं कि मैंने भले गए जन्म में मैंने बहुत पाप किए, I've done many wrong things in my earlier life, but now what I'll do? I'll do this 16 सोमवार, I'll do this 16 शुक्रवार, मंगलवार, जो भी है आपका वो मैं कर लूंगा और मैं उसको सीधा कर लूंगा. दिस इज अल्पमेधसा. ये अल्प में भाई, ये इससे नहीं होने वाला. प्लीज रेस्पेक्ट, प्लीज पे योर रेस्पेक्ट्स एंड थैंक्स गिविंग टू देवी देवतास, बट डोंट ट्राई टू यूज देम. यू कांट यूज देम. वो और देवी देवतास, बाय द वे 33 करोड़ देवी देवतास, उसका एक सिस्टम है, कैलकुलेशन है. देयर आर बेसिकली 33 मेन, दैट इज आदित्यस, वसुस एंड ऑल दैट, दे आर टोटल मेकिंग 33. उनके अंडर जो आता है, इट्स लाइक गवर्नमेंट ऑफिस. गवर्नमेंट ऑफिस में एक ऊपर एक बॉस रहता है, उसके नीचे ना A1, A2, A3, A4 ऐसा करके ऑफिसर्स आते हैं. देन उसके अंदर E1, E2, E3, लाइक हायरार्की इज दैट. इन गवर्नमेंट ऑफिस देयर इज लॉट ऑफ हायरार्कीज लाइक दैट. वैसे ही है, सम आर गिविंग मोर अथॉरिटी, सम आर हैविंग लेस अथॉरिटी. तो एक्चुअली गवर्नमेंट सिस्टम वाज टेकन फ्रॉम देवता. देवी देवता का मैनेजमेंट से मालूम पड़ा है. दे लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर यूनिवर्स. कोई इंद्र बन गया, वो पानी देखता है, वाटर सप्लाई, बरसात का वो देखता है. कोई अग्नि है तो फायर का देखता है, सूर्य देवता सूर्य का देखता है. एंड बेस्ट पार्ट है, ये देवी देवता का भी छुट्टी नहीं ले सकता. ये वर्किंग 365 डेज, जैसा आपका मिलिट्री पुलिस वैसा. वाई भाई, सूर्य देवता, कैन यू हैव सीन? आज सूर्य देवता बोलेगे नहीं, आज आई वांट टू टेक अ CL कैजुअल लीव, आई वांट टू टेक अ CL, मैं भी 10 दिन के लिए घूमने जाता हूँ. Chandrama also no option. He has to also come up. It is meaning whenever it is evening time, he has to pop out. So they are the people who are looking after the entire universal arrangement. It is said various varieties of bodies are given. If your body is having lot, if as a soul you have done lot of punyas, मतलब भर भर के पुण्य, then you get a body of a devata. We don't know, any one of yours might have been one day Brahma also. Might have been one day some Agni, Surya, any of the devatas, Vayu, Varun, कुछ भी हो सकते थे. तो जो पुण्य किया है, बहुत ज्यादा पुण्य किया है, उसको देवता का शरीर. क्यों? देवता योनि में ऑल दिव्य भोग, नॉट लो क्लास भोग, हाई क्लास भोग. बट वहां पे भी टेंशन, असुर कब मारेंगे मालूम नहीं. But you get a higher body. Then let's say those who got mix, good and bad karma, उसको क्या ह्यूमन बीइंग बनेगा, इस धरती पे आएगा, कभी सुख तो कभी दुख. एक दिवाली हंसता रहेगा, दूसरा दिवाली रोता रहेगा. Whatever it is, life long is full of ups and downs, ups and downs, ups and downs. Those who are very, for them animal yoni, sinful, then called as moving chara. Then last, the most, उनका लाइफ बहुत लंबा रहता है, जैसे वो पेड़ बन जाते हैं. दे बिकम जंगम, फिक्स्ड, हिल नहीं सकते हैं. एंड पूरे बिना कपड़े के धूप में, बारिश में, ठंडी में, गर्मी में वैसे खड़ा रहना है. ये सब बॉडीज है. दे आर ऑल बॉडीज. देयर इज लाइफ इन दैट ट्री ऑल्सो, देयर इज लाइफ इन द बर्ड, लाइफ इन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. एंड सिमिलरली body, that is the devata body, also has got life. So please understand, they are all various categories of bodies. कैटेगरीज में आप में से वी कैन शटल. ये जन्म में पाप किया, चलो अगले जन्म में गधा, घोड़ा, चौरासी लाख योनि, बहुत वेराइटीज है. आपको गंदा काम करना है, आपको कॉकरोच, गटर में रहेंगे, बट आपको एहसास नहीं होगा कि आप गटर में रहेंगे. What a nice environment this is. A pig
It doesn't know what it is eating. But according to him, it is eating rasgulla. Because it will die. And that is how we also are into the same. We are also having the same thought process. Our thought process is also, oh, I am happy. I'll थोड़ा और धंधा बढ़ेगा, थोड़ा और पैसा आएगा. अच्छी बात. कर्म में है, प्रारब्ध में है, तो आएगा. उल्टा खड़ा रहने से नहीं आने वाला. उल्टा सीधा काम करने से होते हैं आपका प्रारब्ध नहीं. ये प्रारब्ध तो चेंज नहीं होगा, उल्टा और प्रारब्ध बन रहा है जिसको आपको अगले जन्म में भुगतना. दिस वी रिमेंबर और वी I am doing some wrong activity to survive in this earth. Lord says that very nice, but next birth suffer. So that's why finally Lord says, general people's myth, अरे भगवान का भक्ति करो या देवता का करो, सब एक ही के पास जाएगा. एक ऐसे सब डायलॉग्स आते हैं. देवताओं का भक्ति करने वाले देवताओं के पास जाएंगे, भगवान का भक्ति करने वाले भगवान पे जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे. Those who are worshipping ghosts, भूत पिशाच डाकिनी, उनके पास जाएंगे, उनका भी लोक है. You will go to that loka. So what you are doing, respectively, you will get that destination. So in the next verse, Lord is talking about Vyaktam and Avyaktam. Avyaktam Vyaktam Apanam Manyate Mam Abuddhaya Param Bhavam Ajananto Mam Avyam Anuttamam. Very important. Please read the translation. Unfortunately, who do not know the purpose, think that I, the supreme personality of God, Krishna, was impossible before and is now again impossible. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is impenetrable. This is the general misunderstanding with people. What is Lord saying? अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम. मैं पहले अव्यक्त था. अव्यक्त मतलब I was in the form of light, I was in the form of gas, white something. That's what is shown in serials and movies, right? Something like haze, cloud, and then I've taken a form like Nrsimha, I've taken a form like Krishna, I've taken a form of Rama. So it is that same अव्यक्त जो भगवान है, निर्गुण है. भगवान को निर्गुण भी टैग दे दिया है. सब लोग बोलते भगवान निर्गुण है. निर्गुण का मतलब क्या? Beyond the three modes of nature, because he is the creator of the three modes of nature. सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से जो ऊपर है, परे है, he is निर्गुणा. ये नहीं कि उसके अंदर कोई गुण नहीं है, कोई गुण नहीं है. तो that's why the people think he is a form of some light or gas. No, he is nirguna means he is above three modes of nature. What does this mean? Can anyone clarify this a little more? Above three modes of nature. बोलिए. He is not. Okay, something more. आदर्श बोलो. इसका आवाज आ रहा है कर 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 कर. प्रियस रिलैक्स. आप सोच रहे हो इसलिए वो रिलैक्स हो. बोलिए माता जी. What is the meaning of above the three? Close but not correct. Very, 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 very close, but you are not correct. Come on, clue मिल गया. अभी तो बोलो. हाँ. Means what? Okay, it's same thing in between you and what she said. Lord, let's say
Like you go to office, do some work, you shout at someone. You do that because you are under the three modes of nature. Whereas Lord is not under the three modes of nature. Means what? His deeds is not come under the category or get influenced by the three modes of nature. None of his activities है और कर्म है वो दिव्य है और लोग व्यक्तिम अव्यक्तिम व्यक्तिम आपन मनिए मान लेते हैं बुद्धू बुद्धू लोग मुझे ऐसा मानते हैं कि आई वॉज अव्यक्त निराकार नाउ आई बिकम साकार एंड तो मेरा परम भाव माय एक्सेलेंट क्वालिटीज अजानंतो जानते नहीं है दे डोंट नो मी एंड देन व्हाट आर दे व्हाट इज सेइंग व्हाट आर दोस क्वालिटीज माम अव्ययम उत्तमम उत्तमम नहीं अनुत्तमम आई एम सुपर एक्सेलेंट बट लोग नहीं जानते हैं क्यों एक तो बुद्धू है they think I am nirguna. No, my activities are not inspired by the three gunas. कोई सतगुण से कार्य नहीं करता हूँ कोई रजगुण से करता हूँ नहीं और कोई तमोगुण से नहीं करता हूँ अगर मैंने कुछ किसी को श्राप देने करवाया तो उसके पीछे कोई कारण है अगर मैंने किसी को कुछ बड़ी से बून दिया है तो उसके पीछे भी कुछ कारण है एंटायर महाभारत प्री प्लान एवरीथिंग प्री प्लान Krishna does everything super. He does everything super planning. Bharata is coming and telling, please come back and take the kingdom. I am not fit for it. I am not entitled for it. You are the person entitled for it. No. I have to keep up dharma. Dharma was secondary. For him, his priority was to kill the asuras. Ravana and the other asuras, killing was his priority. So everything, every activity, what God is doing is all well planned. And we, because of our, see, बार दो श्लोक में कहा गया भगवान ने एक पहले श्लोक में क्या बोला अंतवंतु फलम तेषम तद भवेत अल्पमेधसा कम बुद्धि वाला एंड ये श्लोक में क्या बोला है अबुद्धया दैट ऑल्सो मीन्स सेम थिंग बुद्धू है Why he is telling us buddhu? To understand Lord's real or actual condition. We cannot understand Lord's real or actual condition. Why? Okay, हम लोग under the three modes of nature हैं. That is one part. Secondly, why? We are all having a gross body. We all think as per a gross body. जिनका जो शरीर है, let's say I'm dark, fair, darker than me, fairer than me. It's human, right? Fat, he will think, oh, he is slimmer than me, he is fatter than me. Slim will say he is too fat. Look at him, he is looking ugly. Or you are looking like a Maria. Why is this difference happening? This is because we are in the comparative mood with respect to our body. As per our body. For example, we say a soul doesn't have a gender. The minute the soul takes birth in a female body, immediately desires some अच्छा lipstick डालूं, beauty treatment करूं, dress पहनूं, ये करूं. No, a female has got by default. You don't have to teach a female. Oh, you are a female, you have to dress. Or nor you have to teach a male, oh, you're a man, you don't have to. T-shirt is okay, a t-shirt is okay. Now, I'm not talking of today's date, okay. Men go to the parlor more than women nowadays. I mean, that's a tragedy. So, the point is, men in today's date is a different perspective. But on a toto, we have to understand that the minute you take that body, you start behaving in that way. The lion doesn't feel you ought to be taught, hey, you're a lion, you have to roar. Then wow, roar. कुत्ता को भौंकना सिखाना पड़ता है. By default वो भौंकता है. Because the minute you take that body, your
soul or your mind, rather, not your soul, but your mind adapts to that body and acts according to that. In humans also. Let's say you're taken a body of a Punjabi and you're taken a body of a Gujarati and you're taken a body of a South Indian. By default, everyone will be attracted to different types of food stuff. The South Indian will run for idli, vada, sambar. The Punjabi will run for parathas. Gujarati will run for dhokla and fafda. Why? Is there any special body? And that is why when we are adapted to this material body, we find it difficult to accept, oh, there is a superior body. एक बॉडी जो ऊंचा है, हायर है, या I mean, I should not say God as a body, but as a personality who is much superior, who is anuttamam, he is not and abhyayam, everlasting, never going to decay. We look at a young child, oh, अभी तो ये छोटा है. Old man, oh, very old man, बूढ़ा है. अरे, what you are talking from the soul's perspective? Who is young and who is old? Everyone is the same. Someone is housed in an old body, someone is housed in a young body. That's it. The body gets decay, it dies, then you take up a new body. Similarly, Lord is saying, ये कम बुद्धि वाले मुझे नहीं समझ पाते हैं. Yes, next verse please. I am never manifest to the foolish and unaware, covered by the infernal potency, and therefore they do not know that I am unborn and informed. नाहं प्रकाशस्य सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ो न अभिजानान्ति लोको माम अजम अव्ययम. Lord is very clear. So again, you have to understand this. ये Lord is trying to, because अभी कलयुग आने वाला है, द्वापर युग खत्म हो रहा है, कलयुग आने वाला है. इसके बाद और कोई भगवान का अवतार, ऐसा कोई बड़ा अवतार नहीं है जहाँ पे स्वयं भगवान आने वाले हैं. अभी कल के अवतार में आएंगे, बाकी जितना भी अवतार हो गया है. तो लॉर्ड इज सेइंग, अभी भगवत गीता इज द लास्ट थिंग आई एम गोइंग टू स्पीक. इसके बाद मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं अवतार लेने वाला हूँ. तो व्हाट, लेट मी टेल एवरीथिंग टू द पीपल, दिस फूलिश पीपल, अबाउट माई सेल्फ. ना हम प्रकाशस्य सर्वस्य, आई डोंट एग्जिबिट माई सेल्फ एवरीवेयर. बीच में एक वीडियो निकला था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन. मंदिर में भगवान की मुकुट गिर जाता है, भगवान राधा रानी के हाथ से छूटा और भगवान के पैर में गिरा. बहुत बहुत फोटोज वीडियोस निकले थे ऐसे बीच में. एंड यू नो देन दे से, ओ सी लॉर्ड इज प्रेजेंट. लॉर्ड, भगवान का प्रेम देखो राधा रानी के प्रति. भगवान के हाथ से फूल गिरा और राधा रानी के चरण में गिरा, और वाइस वर्सा, आई डोंट रिमेम्बर. देन एक जगह पे मुकुट, भगवान का मुकुट ऐसा टेढ़ा हो गया, तो भगवान इज प्लेइंग फ्लूइड. नॉनसेंस. भगवान को ऐसा अपने आप को व्यक्त करने की जरूरत ही नहीं है. दिस इज द वे इन विच अल्प बुद्धि पीपल विल थिंक. व्हाट इज द नीड ऑफ हिमसेल्फ? भगवान को प्रूव करने की जरूरत पड़ती है. डू यू हैव टू शो एंड योर गो एंड शो योरसेल्फ हाउ मच यू डिड, व्हाट यू डिड नॉट डिड. आप इन एज ह्यूमंस यू हैव योर ओन सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ कंट्रोल, एंड यू डोंट bend down. Where is the question of the Supreme Lord coming and proving, देख देख मैंने बांसुरी टेढ़ा किया, आप देख ले मैं हूं, प्लीज अंडरस्टैंड आई एम देयर. नो, इट इज नॉट दैट. So that is why नाम प्रकाश सर्वस्य. I cover myself, I hide myself with Yoga Maya. What is this Yoga Maya? Two Mayas, right? Mahamaya and Yoga Maya. What is the difference? What is the difference? अरे बेसिक क्वेश्चन है बाबा, बोलो. What is Yoga Maya? What is Mahamaya? Don't you think it's time for upgrading your answer? I'm not saying your answer is wrong, but it's time to
Upgrade. A typical answer. There is nothing of God which is external. भगवान का क्या external है? Everything is internal. You and I are also his internal potency only, no? ममे वंशी जीव लोके जीव भूत सनातन. तो हम लोग भी तो internal है. So where is the question of external potency? I have always given this example. I'll give this again. Let's say you are walking on the road and a police person or a police van is coming towards you. What will be your reaction? What will be your reaction? Because you have not done anything. But suppose you have done a murder and you are going. Suppose you have done some chori, some theft, and you are going. And the same police wala is come. He has not asked you any question. He is not looking at you also. बस ऐसा ऐसा घूम रहा है. मेरे को ढूंढ रहा है. मेरे को ढूंढ रहा है. पुलिस मेरे को ढूंढ रहा है. मैंने अभी खून किया, उसको मालूम पड़ गया रहेगा. वो लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या रहेगा, चोरी का इन्फॉर्मेशन. That's why after 10 years also these will get caught. No, how? Somewhere or other, the consciously, subconsciously, you're aware. What? Yoga Maya and Mahamaya is the same. For non-devotees, it is Mahamaya, and for devotees, it is Yoga. Police for chore and for normal people. There is only one police. When a normal person sees, he is not afraid because it's in fact nice. Oh, मेरा security है. I am safe. Police वाला है तो अभी कुछ यहाँ दंगल नहीं हो. And if you are a criminal yourself, you will have the fear factor. Similarly, Yoga Maya is one of the energies of the Lord which is meant to cover him spiritually. Spiritually cover. आप लोग, many people may go to that, 84 कोस yatra or let's say Vrindavan yatra or n number of things. There is always a sidetrack to all the original paths. Sidetrack in the sense where your mind will be, but not on actually on God. Something which will look spiritual, but it isn't spiritual. It looks spiritual. कुछ कुछ भक्ति जैसा लगेगा. For some, I'll do seva, Prabhuji. For me, that is seva bhakti. It may look spiritual, but it's not spiritual. अगर ऐसा रहता तो जो खाना बनाता है वो पहला भगवत धाम जाना चाहिए. तो मंदिर में खाना काम कर रहा है वो भगवत धाम जाना चाहिए. नहीं होता. It is good. I myself say one should take up a seva, but that should engage your mind. But finally, it's what your devotional service, what you do, that is going to take you back to God, not just your service. So these are all side traps which Lord has arranged, and Lord, people get carried away. I'm doing flower seva for so many years. I'll go back. Yes, you will definitely go back, but along with that, you have to do your डिवोशनल पार्ट ऑल्सो. वो नहीं करोगे मैं सिर्फ ये सेवा करूंगा, नहीं होगा. ऐसा रहेगा तो फूल मार्केट में कितना आदमी लोग है जो फूलों का बिजनेस कर रहे हैं, एंड लेट्स से 80% उनका माल मंदिरों में ही जा रहा है, भले 20% लास्ट पे जा रहा है. We put garland on the dead body also, right? We put garland on the marriages also. So it may go all to various reasons, but only a specific segment goes to, or a major segment goes to God. But then in that case, they should also go back to God. Right? No. They are not doing devotion, though they are doing service. And there it's not just service, there is business. That is why Lord says, मुझे कोई इतना जल्दी से नहीं जान सकता, मैं अपने आप को आवरणित कर लेता हूं, कवर कर लेता हूं. योग माया समावृतम, आवृतम मीन्स कवर, समावृतम मतलब टोटली कवर. मूढ़ो ना अभिजानाति, मूढ़ा मतलब वापस थर्ड श्लोका where Lord is saying, बुद्धू, we are those बुद्धूस. मूढ़ो ना अभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम, मैं सभी लोकों में अजम हूं, अजन्मा हूं और अव्ययम हूं, इटर्नल. Everything has eliminated from Narayan and everything will go back to Narayan. I always say, Vedas say, ekaki na ramyate, एकोहम भविष्यामि एकाकी न रम्यते. लॉर्ड सेज मैं अकेला हूं, रम्यते मजा नहीं आ रहा है, बोर हो रहा है, अकेला क्या करेगा. ही इज गॉड, ही इज आत्माराम, बट ही इज इनटू द
clutches of his devotees. He wants devotees. So he says, एकाकी न रम्यते, मुझे अकेले में रमता नहीं है मुझे, तो मैं एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूं बहुत हो जाता हूं. And that is how he creates human beings, animals, everything for his enjoyment. And then he watches, oh ये भक्ति के नाम पे ये क्या कर रहा है, भक्ति के नाम पे ये क्या कर रहा है. Entertainment. Lord also entertains. Many times you also watch your children do some foolish act, right? And gives very good pleasure. Arey, see, look at the fool. He's trying to do something idiotic. Lord is also looking at us. हाँ, 50 साल का हो गया फिर भी ऐसे ही कर रहा है, 60 साल का हो गया फिर भी कर रहा है, 10 साल का है फिर भी कर रहा है. He is enjoying our idiotic behavior. So finally you have to understand. Naham prakasha sarvasya yogamaya samavritam. The fools will never understand God. They will be busy fighting. Lord is vyakta, avyakta. It is impersonal, personal. Lord is having a swarupa, not having a swarupa. इसी झगड़े में ही पूरी आयु निकल जाएगी. अरे बाबा मैं अव्यक्त भी हूं और व्यक्त भी हूं. Let's imagine from our perspective, from human perspective, Krishna came to this earth as God. Okay? Narayan came as Krishna and God. Then other duties of God, how are they happening? When he is playing with Yashoda Mata, he is dancing for a cup of curds in front of the gopis and he is doing Ras Leela. वो टाइम पे दुनिया कैसे चल रही है? That is the power, that is the greatness. That is why he is saying, I am Anuttamam, I am something supernatural. Though I may come as Lord Ramchandra ji, I may be roaming in the forest, but the whole world is going on. The whole Sisti, whole creation is moving. It is not stopping at any moment. And it cannot stop because Lord is holding every अणु. विष्णु है ना, हर अणु को पकड़ के रखे. फिर भी मैं कभी कभी आता हूं, मेरा एक भाग यहाँ आता है जो साकार स्वरूप में आता है, वो करता है. पर ये नहीं कि मेरा साकार स्वरूप नहीं है. वैकुंठ में मैं तभी भी मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं जब मैं राम के स्वरूप में एग्जिस्ट कर रहा हूं, कृष्ण के स्वरूप में एग्जिस्ट कर रहा हूं, और मैं ब्रह्मन स्वरूप में भगवान पूरा दुनिया को, सृष्टि को संभाल भी रहा हूं. आई एम टेकिंग केयर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मन. So this is how we have to understand. That is why I always give this golden statement of mine. We all know God is great, but we all don't know how great God is. Because the greatness of God can be understood only when we see from the perspective of the Shastra. But when we are seeing from the perspective of our human self. Oh, Krishna एक साथ सभी गोपियों के साथ नाच रहे थे, ठीक है, एक्सपैंड हुआ रहेगा. आई कांट एक्सपैंड, क्या ठीक है, भगवान है, एक्सपैंड करते रहेंगे. अरे यहाँ पे एक्सपैंड भी किए तो भी दुनिया चल रहा है. So somewhere in Vaikuntha he is there. His Ansha is staying in Vaikuntha, one Ansha is here, that is what is Lord. So that is why, what do people say? Better to do devotion of the Lord than rather than tattva of the Lord. हम लोग भगवान को, let me understand the technical specs. मोबाइल लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो we do the specs. अच्छा, technical specs पढ़ने के बाद laptop, when the movie is running, do you understand how the circuit is working, how the CPU is running, how is the working? Do you have any idea? Complex thing which is working. Something complex is working. But what is working? Even the user doesn't know. Why? Even the software people doesn't know what is happening with the hardware. The hardware people don't know what is happening with the software. So that complex, when a simple laptop cannot be understood, or a mobile cannot be understood from our simple, non-knowledgeable brain, how do you think you can understand the Supreme Lord, who is all-pervading and all-supreme? So, okay, with this, I'd like to close today's session. Anybody has got any doubts, questions, can ask.